Okay, so yesterday we have seen that for a n type of semiconductor, okay, the carrier concentration at low temperature is given by half Nc Nd square root exponential minus Ec minus Ed by 2 kT. Okay, so this is expression at low temperature. Yesterday we have calculated what is the carrier concentration. Okay, so this is carrier concentration at low temperature. Okay, so carrier concentration, okay, at low temperature. And we also know that at moderate temperatures, okay, or around this room temperature, this is my EC, okay, this is the EV, and this is here I have this donor level. Okay, so this is donor level. So I know at moderate temperatures, okay, all these donors sitting here, they will get ionized. So, and these donors will reach to the conduction band. So at moderate temperature, I can say the carrier concentration is Nd. Okay, if I assume all the atoms are ionized, okay, so I can write the carrier concentration is Nd. Okay, so this is middle temperature, okay, or medium temperature range. Okay, that was low temperature, this is the medium temperature. And high temperature पे क्या होगा? If I am applying giving high temperature to system, what will happen? All these electrons sitting here, okay, they will break the bond and will reach to the conduction band. Okay, so अब impurity atom तो 1% 2% ही होता है. Okay, these electrons the number of these electrons are very high. If we are supplying sufficiently energy, okay, so at high temperature what will happen? The number of these electron, okay, will reaching from valence band to conduction band, the intrinsic electrons, okay, the number will be higher compared to or comparable to this Nd or higher. Okay, and then it will start that type of transition or that type of conductivity is called intrinsic conductivity. Okay, so at higher temperature the number of intrinsic electron, okay, and intrinsic hole will be comparable to Nd. Okay, so we can, so at high temperature, what is the expression for conductivity? What is the intrinsic carrier concentration? NC NB e to the power minus kg upon 2 kt. Okay, so this is my higher temperature. Okay, high temperature range, high temperature range. Okay, so now we can plot the graph of conductivity. यहाँ तक क्लियर है? Yes sir. यहाँ तक ये चीज क्लियर है आपको? Yes sir. Sir. Hello. Sir. Yes sir. Am I audible? Sir. Yes, you are audible sir. Sir. Am I audible? सर को आवाज नहीं आ रही Yes. है. अजिंक्य? हाँ सर, आपकी आवाज हमारी आवाज आपको नहीं आ Am I रही है. audible? Okay, but you people are not audible. Your voice is not coming. I can plot the conductive versus temperature graph. So if I plot, first I'm going to plot carrier density. Okay, so log of concentration. Okay, log of carrier density or concentration. So what with respect to 1 by T? So I know that at low temperature my N is proportional to e power
EC minus ED by 2 kT. Okay, and this EC minus ED is nothing, it is equal to ionization energy. Okay, so that means I can write my N is proportional to E power minus EI upon 2 kT. So if I take log, okay, this will give me a line with negative slope. And if I, this is low temperature region, if I go to medium temperature, then my concentration is almost constant. So I can write this is my medium temperature range. And if I go higher temperature range, then we know that my intrinsic carrier concentration again increases. So slope of this graph okay, is equal to minus EI by 2 kT. Okay, so this region, this is a low temperature region. Okay, and this is called ionization range. Ionization range. Okay, ionization range का मतलब क्या है कि our atoms get ionized. So this is EC, this is EV, and this is ED. Okay, so at low temperature this energy is small. At low temperature my atom is getting ionized. Okay, and the slope of this graph will you give the ionization energy. Okay, at middle temperature range or medium temperature range, your concentration of electron is constant. Okay, and this region is called your extrinsic region. This region is called extrinsic region. Okay, and when you go higher temperature, then the slope of this graph is equal to minus EG by 2k. Okay, here EA by 2k, and this portion of the graph, this region is called your intrinsic region. So this is the temperature variation of carrier concentration. If I now if I want to draw conductivity, so conductivity is equal to sigma and carrier concentration into charge into mobility. Okay, so sigma is a function of T, so mu is mobility also function of T. So if I draw mobility, I know that at lower temperature my mobility increases with temperature. If I plot the graph of mobility, okay, so I know my mobility is proportional to T power 3/2 at low temperature, and at high temperature my mobility decreases. Is proportional to minus 2 power proportional to T power minus 2/3. So at low temperature my mobility get increases and high temperatures get decreases. So now if I combine these two graph, okay, so what will be my conductivity? So my conductivity, it will increase. Okay, and slightly it will go drop, and again it will increase. हाँ बोलिए. ये जो डॉटेड लाइन आपने बनाया सर, ये ln सिग्मा वर्सेस 1/t का है ना? ये आपको ये मोबिलिटी है ना? हाँ, मोबिलिटी विद टेम्परेचर इफेक्ट बताया था ना ग्राफ पहले आपको एक बार. हाँ सर. सो तो यहाँ पे क्या होगा, कंडक्टिविटी इंक्रीज होगा और ये पोर्शन भी कांस्टेंट ही होता है. ओके, बहुत कम स्लोप होता है. ओके, सो दिस हियर कंडक्टिविटी इंक्रीज एंड it will go slightly, it will drop. Okay, because conductivity is decreasing with increasing temperature, and then again when an interesting result will come, it will again increase. Okay, so this is my ln sigma graph. Okay, so this is the, and we know intrinsic के लिए तो खाली यही ग्राफ आता है. Okay, so this is my temperature versus conductivity graph. Temperature versus conductivity plot. Okay, for extrinsic semiconductor. ये n टाइप के लिए प्लॉट किया, p टाइप के लिए भी ऐसे आता है, extrinsic semiconductor. ओके, ये क्लियर है यहां तक?
सर ये जो म्यू है सर कहते टी की पावर -2/3 है सर, और ये तो 1/t है ना सर। तो सर ये क्या ये तो कम होना चाहिए ना सर, फिर ये तो कांस्टेंट होना चाहिए। ये 1/t ये हाई टेम्परेचर रीजन, ये हाई टेम्परेचर रीजन है सर। मैं लो टेम्परेचर पे कह रहा हूँ सर। हाँ लो टेम्परेचर रीजन है हाँ सर सॉरी, हाँ सर, हाई टेम्परेचर ये इधर 1/t जो हाई टेम्परेचर है, म्यू इज प्रोपोर्शनल, यस सर। हाँ ये वाला रीजन सर, यस सर। हाँ तो सर, ये तो यहाँ उल्टा जा रहे हैं ना, 1/t है ना। अगर उल्टा जा रहे हैं तो क्या 1/t कम हो रहा है, इसका मतलब t ज्यादा हो रहा है, तो उल्टा जा रहे हैं तो t ये टी की पावर भी तो -2/3 है सर। -2/3 है ना, तो कम हो रहा है ना, मोबिलिटी कम हो रही है ना, टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं, मोबिलिटी कम होती जा रही है। सर वो तो क्योंकि सर मल्टीप्लाई होगा ना सर उसके साथ, उसके साथ में मल्टीप्लाई होगा ना सर ये, इस ग्राफ के साथ में। यस सर। हाँ पर वो इंक्रीज इज वेरी हाई, ओके, तो ओवरऑल इट विल इंक्रीज, ओके, ओवरऑल इट विल इंक्रीज ओवरऑल, क्योंकि इंक्रीज बहुत ज्यादा होता है कंपेयर टू ये, तो इसका ऑर्डर तो बहुत कम होता है, उसमें ऑर्डर बहुत हाई होता है, ओके। सर मतलब कि इससे पहले हो जाएगा सर। हाँ सर मतलब ये पॉइंट से पहले हो जाएगा सर। इसके कम होने का इफेक्ट नहीं पड़ेगा इस पे, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई होके ये बढ़ जाएगा इंटरेस्टिंग रीजन में हाई टेम्परेचर पे, ठीक है सर। ठीक है। मोबिलिटी का वेरिएशन बहुत ज्यादा, टेम्परेचर का वेरिएशन बहुत ज्यादा नहीं आता है, ठीक है। यहाँ पे भी जो इंक्रीज होता है वो स्लाइटली इंक्रीज होता है, तो आगे चले। यस सर। Okay. Now if I okay, now Fermi level का क्या होता है? I know in n type my Fermi level is above intrinsic level, so this is graph EF minus EI, this is my intrinsic level, EF equal to EI, okay. Now when you increase the temperature, okay, you know at high temperature it becomes intrinsic. Intrinsic का मतलब क्या है, जब वो n टाइप था तो उसमें खाली इलेक्ट्रॉन है, होल्स है ही नहीं, तो जैसे जैसे होल्स बढ़ते जाएंगे, ओके, तो व्हाट विल हैपन, योर फर्मी लेवल विल स्टार्ट डिक्रीजिंग। इंट्रिंसिक में क्या होता है, मिडिल में होता है, क्योंकि द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल्स आर सेम, so as you increase the temperature now you are getting an electron in conduction band as well as holes also in the valence band, so your Fermi level will start decreasing, it will start come down, and at certain temperature, okay, high temperature, it will become equal to the intrinsic region, okay. Same happen for this your p type material. So suppose my concentration nd is 10⁻15 centimeter cube, okay, and my acceptor atoms are equal to 10⁻15 centimeter cube. So अगर intrinsic है, extrinsic है, and if any increasing temperature, तो n टाइप का जो फर्मी लेवल है वो धीरे धीरे नीचे आएगा, और पी टाइप का जो फर्मी लेवल है वो धीरे धीरे ऊपर आएगा, ओके। सो सपोज इफ आई इंक्रीज द कंसंट्रेशन नाउ, तो कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो टेम्परेचर ज्यादा चाहिए, दिस इज EF इक्वल टू EI, दिस इज ND 10⁻15, सपोज इट इज 16, okay, then you need more temperature. So slowly with temperature your Fermi level try to come to middle of the band gap. This is your temperature variation of Fermi level, okay. ये क्लियर है? Yes, sir. Sir. This point is clear? Sir. क्योंकि this is your n type, okay, here is a Fermi level close to the conduction band, and intrinsic में यहाँ पे होता है, so when you increase the temperature, okay, this will come down slowly. Similarly in p type your Fermi level is here, with increase in temperature this will approach to the Fermi level of intrinsic, because conductivity धीरे धीरे intrinsic होती जा रही है, okay. So the Fermi level also again will come towards the middle of the band gap, okay. Am I audible? Yes, sir. What some students I cannot hear, okay. So आगे चले, can you Yes, reply? Okay, हाँ सर। ठीक है।
So now we'll solve some problems, okay, for previous years. Okay, so this is GATE 2014 problem. Okay, so they're saying there's a one n type of semiconductor, okay, whose carrier concentration is given by Nd. Okay, is n equal to Nd. Now what they do, they increase the dopant concentration by 100 factor. Okay, so this is initially, okay, say n1, and now they make it n2 equal to 100 Nd. So they are asking what is the shift in Fermi level. Calculate shift in the Fermi level. चलो रूम टेम्परेचर, हाँ रूम टेम्परेचर दे दिया, ठीक है, कैंसिल हो जाएगा वैसे भी. कैसे करेंगे कैलकुलेट? फॉर्मूला क्या है? सर n equals to nd exponential to the power minus e n equals to d d. nd ओके, एन डी कहाँ से आएगा? एक्सपोनेंशियल या तो फॉर्मूला है n इक्वल टू या तो ni एक्सपोनेंशियल ef माइनस ei बाई kt निकालो. ओके, फर्स्ट केस में एंड सेकंड केस में, एंड देन डिफरेंस ऐसा तरीका तो भी चलेगा ना, n is equal to nd, या फिर पहले हम यूज कर रहे थे वो, या फिर ऐसा यूज कर लो, l इक्वल टू nc एक्सपोनेंशियल ec माइनस ef बाई kt. तो ये तो ये nd हो जाएगा. ओके, सो या तो ये फॉर्मूला यूज करो या ये फॉर्मूला यूज करो, और मुझे चाहिए ई शिफ्ट इन फर्मी लेवल, दैट मींस EF2 माइनस EF1. फर्स्ट केस और सेकंड केस में डिफरेंस चाहिए मुझे. सो यू कैन यूज बोथ द थिंग. नाउ सपोज आई एम यूजिंग दिस फॉर्मूला, ओके, फर्स्ट वन. ओके, तुम नीचे वाला भी कर सकते हो. सो n is given nd. Okay, so say in the beginning it is nd, so 100 nd. Okay, say ni exponential, this is the second case, f2 minus ei upon kt, and first case it is nd. दिख रहा नीचे? नहीं दिख रहा. and first case is nd, ऊपर लिख रहा हूँ वापस, 100 nd is equal to ni exponential ef2 minus e intrinsic by kt. Okay, and is nd is equal to ni exponential ef1 minus ei by kt. Okay, so now I want ef2 minus ef1. Okay, so we divide both things. हाँ, 120 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा है सर. कितना आ रहा है? 120 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट. 20 के 120 तो ले रहा, थोड़ा उसके आसपास से आ रहा है. हाँ, 19.73 मतलब सर अप्रोक्सीमेटली 120. मेरा आंसर आ रहा है 115.125. ओके, मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट. एक मिनट. सो इफ यू डिवाइड दिस वन, क्या हो जाएगा? ये एक्सपोनेंशियल, ओके, EF2 minus ei by kt. Okay, exponential EF1 minus ei by kt. Okay, इसको सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा? EF2 minus EF1. ओके, ये तो कट जाएगा by kt exponential kt. Okay, so this will give me EF2 minus EF1. So log kt ln 100. Okay, so okay, kt कितना लिया? kt क्वेश्चन में इन्होंने दे दिया है. kt is 26 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिया सर. kt ले लो 25 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ओके सर, हाँ सर, फिर सही है सर. So this become 25 milli electron volt. Okay, 25 milli electron volt, and ln 100 कितना होता है?
नहीं आ रहा है 4.605. Okay, so if you multiply, the answer will become 115.125 milli electron volt. ठीक है, सबका ये आ रहा है? 26 था। हाँ, कोई नहीं, ठीक है, दोनों सही है। नीचे चला रहा है, नीचे चला जा रहा है। ओके, so the answer is 115.125 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, सबका आ रहा है? हाँ सर। ओके, so I'm rubbing this one. So there's one more question, GATE 2015. Okay, so they are saying they are given on semiconductor, intrinsic semiconductor whose band gap is Eg equal to 0.72 electron volt. Okay, and they are given mh equal to 6m naught. Okay, 6m n. Okay, and they're asking what is the position of Fermi level with respect to valence band. Okay, what is position of Fermi level with respect to valence band, EV. निकालो, क्या फॉर्मूला है? So you know the formula, EF is equal to EC plus EB by 2 plus 3/4 KT ln MH MN. और सर ये इंट्रिंसिक है? इंट्रिंसिक है। अच्छा, फॉर्मूला यही है क्या? हाँ सर, फॉर्मूला सही है। ओके, ना हमको चाहिए EF माइनस EB, तो यहाँ पे कितना, यहाँ पे क्या हो जाएगा? EC minus EV by 2. EC minus EV by 2, that is EG by 2. Yes sir. Okay, plus 3/4 रूम टेम्परेचर ले लो 300 केल्विन. ओके, 300 केल्विन ले लो, temperature 300 Kelvin. Okay, so your KT will be around milli electron volts, so 0.0258 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ले लो। और ये तो दे रखा है MH by MN रेशियो 6 दे रखा है, 3/4 0.0258. ओके, एंड ln 6, और ln 6 की वैल्यू कितनी आती है? So this become 0.72 by 2 plus 3/4 1.79 0.258, and ln 6 की वैल्यू है 1.791. ओके, सो यू कैन कैलकुलेट कितना आ रहा है अभी? दिस 3/4 कट रहा है नीचे 0.72. ओके, so my answer is coming 0.395 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. आपका चेक करो कितना आ रहा है? Yes sir. 0.3946. हाँ, ओके, चलो ठीक है. आसान क्वेश्चन आते हैं इसमें सेमीकंडक्टर में. ओके, सेमीकंडक्टर और पीएन जंक्शन में ज्यादातर क्वेश्चन जो आते हैं वो फॉर्मूला बेस ही आते हैं. ठीक है, और थोड़ा सर हाँ सर 25 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट सर, ये मेरा थोड़ा सा अलग आ रहा है सर. हाँ, 4 1 आ रहा है. ठीक है, तुमने 25 लिया है, मैंने ठीक है सर, लेकिन हाँ सर ठीक है ठीक है, मैं 26. हाँ 26 कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है. तो या तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं या फिर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं. ओके, सो गेट 2015. okay, so they have given n type semiconductor. okay,
जिसमें इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन दे रखा है 2 × 10⁻19 okay meter cube, okay, and the concentration of electron majority charge carrier they given 4 × 10⁻20 meter cube, okay. So they're asking what is the ratio, this is anti-material, that's why I'm writing n, okay. So majority charge carriers are electron, so they're asking ratio of nn, okay, to p in n, then the ratio of majority carriers to minority carriers. निकालो कितना आएगा. सर 400/1 सर. 400 आएगा, ठीक है. So we know that n for pn is equal to ni square, okay. So pn will be ni given, okay, ni square 4 × 10⁻38. So and nn is given 4 × 10⁻20. This will give me 10⁻18, okay. Correct है कि कुछ mistake हुआ? This is okay. Now I want this nn to pn ratio. So nn is nn to pn. This is 4 × 10⁻20 divided by pn 10⁻18. So 10⁻2 बचेगा. So this become 400. ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. Okay. चले आगे. Yes, sir. Now one more question came in okay. So this question came in net December 2013. So they're saying a sample of silicon has electron and hole mobilities. So electron mobility is given as 0.13, okay, meter square volt second, and the hole mobility is given mu p as 0.05 meter square volt second, okay, at room temperature 300 Kelvin, okay. Now it is doped with phosphorus and aluminum with doping concentration. So phosphorus doping है, phosphorus की doping है, phosphorus doping, okay, that is Nd. Phosphorus is the fifth element, okay. Speaker. Just give me 1 minute. It's not working. Okay. So phosphorus is a fifth group element. It's a donor impurity, and donor impurity concentration is given as 1.5 × 10⁻21, okay, meter cube, and aluminum doping, which is acceptor impurity, it's given as 2.5 × 10⁻21 meter cube, okay. So find the conductivity of the silicon sample at room temperature. Find the conductivity, okay, sigma at room temperature. कैसे करेंगे इसको? So sigma is equal to Nd mu E plus Na mu P.
ओके सो इसमें दोनों तरह की इंप्योरिटी दे रखी है, एनडी भी दे रखा है, एनए भी दे रखा है। ओके ना हमको इसमें देखना पड़ेगा कि इसमें इफेक्टिव डेंसिटी कौन सी है। सो इफेक्टिव डेंसिटी इसमें होल ज्यादा है, so this material will act as a p type material, so you have to calculate effective density, effective dopant or acceptor impurities. so यहाँ पे acceptor impurity ज्यादा है, so this will become now Na minus Nd. okay so Na is 2.5, so ये बच जाएगा हमारे पास 1 into 10⁻21 per meter cube. okay now you know the sample is p type, और पी टाइप की कंडक्टिविटी क्या होती है, सिग्मा इज इक्वल टू एन ए, यहाँ पे एन ए डैश हो जाएगा, एन ए ई एन ए क्यू म्यू. ओके एन ए क्यू क्यू इज चार्ज. ओके एंड म्यू इज अ प्रोटॉन होल्स मोबिलिटी. कितना आ रहा बताओ निकाल के. So acceptor is now 10⁻21. Q is 1.6 into 10⁻−19. Okay, and mu p की वैल्यू कितनी देखिए 0.05. ओके 0.05. हाँ ओके 0.05 मीटर स्क्वायर पर सेकंड. कितना रहा आंसर सर? 8 मोह पर मीटर, 8 मोह पर मीटर. 8 आएगा कि कुछ 0.08 आएगा, कुछ आएगा. पावर देखो अच्छे से. 0.08 into 10 to power 0.08 10 to power 2. तो 8 ओम ही हो गया ना. ओके तो 8 ओम ही हो गया. सो अगर 8 आ रहा है तो ठीक है. कंडक्टिविटी का यूनिट क्या होती है? कंडक्टिविटी की यूनिट क्या होती है? सीमन पर मीटर. सीमन पर मीटर. ओके या महो इनवर्स मीटर इनवर्स. सर डायरेक्ट फार्मूला पर पुट करने पे कितना आ रहा है? डायरेक्ट करके देखो, डायरेक्ट से भी आएगा. कितना आ रहा है देखो डायरेक्ट से. नहीं वो तो नेग्लिजिबल हो जाएगा ना. डायरेक्ट से भी सेम ही आना चाहिए. डायरेक्ट फार्मूला यूज करने से भी सेम आना चाहिए. देखो कितना आ रहा है. सेम ही आना चाहिए, ज्यादा फर्क नहीं आएगा. ओके आगे चलें. यस सर. ओके यू कैन चेक. ओके तो ये 16 हो जाएगा ना. अब कैलकुलेशन कर लेना. कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकती है. ये 8 है कि 0.08 है, चेक कर लेना एक बार. नाउ पुट द हेडिंग चार्ज ट्रांसपोर्ट ये किसका चल इसको म्यूट करो. चार्ज ट्रांसपोर्ट इन सेमीकंडक्टर. इसका माइक ऑन है. दीपक इसको माइक ऑफ करो, म्यूट करो. ओके सो इन नाउ चार्ज ट्रांसपोर्ट इन सेमीकंडक्टर मींस सेमीकंडक्टर के अंदर कैसे चार्ज फ्लो होता है. ओके सो चार्ज ट्रांसपोर्ट इन सेमीकंडक्टर हैपेंस टू वे. फर्स्ट इज योर ड्रिफ्ट करंट. ओके ड्रिफ्ट करंट इज फ्लो ऑफ चार्ज due to applied electric field. Okay and then there is second mechanism by which charge can move, that is called diffusion current. Okay diffusion current. Okay so flow of charge due to concentration gradients. ओके सो ये दोनों मैकेनिज्म क्या करते हैं कि सेमीकंडक्टर में करंट प्रोड्यूस करते हैं. ओके सो नाउ विल सी दिस वन बाय वन. ड्रिफ्ट आपको पता ही है. ओके व्हेनेवर वी अप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके सो दिस इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई फोर्स ऑन चार्जेस, सो योर होल विल मूव
in the direction of electric field, while your electron move in the opposite direction of electric field. Okay, that is called drift current. Okay, so if I say drift current density, so drift current density is given by J and Q VD. Okay, so VD is what? VD is your drift velocity. So I know this is my semiconductor sample, and suppose if I have only electrons or holes. Okay, so these electrons are doing random motions. Okay, at all temperature these electrons are doing random motion. So when I apply electric field, okay, because of this electric field, they get velocity in a fixed in certain direction. Okay, or in the direction of electric field if they are holes, or opposite to the electric field when if they are electrons. Okay, and they start moving with a, suppose here there are lattice also there. Yeah, here lattice also there. So there will be scattering with the lattice, but still they will move with some certain velocity or some average velocity. That average velocity is called your drift velocity. Okay, so drift velocity की definition क्या है? In the when you apply electric field, okay, in the crystal your charge carriers move with some average speed. That speed is called your drift velocity. Okay, and I know my drift velocity is equal to mu into E. Okay, so suppose it is a electron current density. So electron current density, what will happen? My always I take the direction of current opposite to the velocity. If my electrons are moving in this direction, okay, with application of electric field, then I say my conventional direction is opposite to the flow of electron. So this will be minus. Okay, and similarly this is VD, mu, and electric field. This will be VD is opposite to electric field, so VD is also minus. Okay, now if I want to write my electron current drift velocity, so this is because of drift. So drift current density due to electron, so this will be my NQ. Okay, VD की जगह कर दूंगा mu and E, minus minus plus हो जाएगा, so mu and E. So this is my expression for drift current velocity. Okay, drift current velocity due to electrons. Okay, similarly if I write the expression for drift current density for holes, that will come NQ mu P electric field. Okay, and the total drift current in a semiconductor, okay, is given by J drift, okay, due to J electron drift plus J hole drift. So if I write now total drift current density, that will be equal to NQ mu and electric field plus and P, yeah, P आएगा. Okay, charge case concentration is P in the case of hole. So P Q mu P E. So this is the expression for drift current density. Okay, now similarly if I write diffusion current, okay, so what is diffusion current? Okay, diffusion current is the current which produces due to concentration gradients. Okay, so ये current useful है when we'll study PN junction. Okay, because in PN junction, if it is a homogeneous semiconductor, you have N type or P type, then the current concentration is constant. So there is no diffusion current. Okay, so when you bring two crystal like P or N together, then one side you have more number of holes, and other side you have more number of electrons. Okay, so whenever there is a concentration gradient, okay, you are, because of this concentration gradient also your charges diffuse, and that they produce diffusion current. Okay, for example, suppose this is my P region. Okay, so here I have holes. Okay, so this is a high concentration region. Here plus is represent holes. Okay,
So say this is x is equal to 0, and here if I move from right side of x is equal to 0, here the concentration is whole is very less. So this will this will produce a concentration gradient, okay, and Fick's law says, this is called Fick's law, okay. Fick's law say whenever there is a concentration gradient, okay, then there will be diffusion of particles. So here particles are holes, so what will happen, there will be flux, okay, flux of particle, and that is given by d diffusion constant and concentration gradient. So here if there are holes, that become dp upon dx, and this is the diffusion coefficient for particle. Here we have holes, so diffusion coefficient of holes, okay. Now one more thing, because my holes are moving in this direction, okay, so my diffusion current will be also in this direction, okay, but this dp minus dx, here high concentration, this is low concentration, so I'm moving from p high सर to ये F क्या है? हाँ F ये f flux, f is a flux. Okay. So this here we have concentration whole concentration high, here we have concentration low, okay. So when I take dp upon dx, that will come negative, okay. So in order to make it positive, I'll put sign here minus, because we are moving in, current is in this direction, okay, and this is negative. So if in order to make current positive, I'll put minus sign here for holes, okay. So this is the Fick's law. Now if I want to produce the current, diffusion current due to holes, सर ये नेगेटिव नहीं समझ. नेगेटिव मतलब भी ये फिक्स लॉ है. अब फ्लक्स मूव कर रहा है इधर हाई से लो, ठीक है, हाई से लो फ्लक्स मूव कर रहा है. अब dp बाय dx तो नेगेटिव है क्योंकि यहाँ पर हाई कंसंट्रेशन है. So if I take dp by dx, the change in whole concentration p high, okay, so p high to, okay, just check. नहीं dp क्या होता है, dp क्या होता है final minus initial, okay, so this become p low p final, okay, upon dx. So this is negative, so in order to make it positive, I am putting minus sign here. So this is the Fick's law, standard expression for Fick's law. Now this is the flow of particle. Here particles are charged particle, okay, so I have to multiply in order to produce current. I have to multiply by charge, so this become my diffusion current due to holes, okay. So if I write expression for diffusion current for holes, density, that is diffusion, okay, that will become my q dp, okay, upon dp upon dx, okay. Similarly if I write now for electrons, okay, so suppose here I have a low concentration of electron. For example, it happens in p-n junction, okay, p plus n junction. So here low concentration, and in this side I have a higher concentration, okay. So again there will be flux of electrons, okay, that will given by Fn, okay, minus dn by dx, okay. And if I write the diffusion current due to electron, diffusion current, okay, that will become minus q into dn by minus q into Fn, okay. So this will give me q dn upon dx, okay. So this will be the direction of, now electrons are moving here, okay, current will be here, electron are moving here, okay, but current will be opposite to the this one, okay, flow. So this will, because the charge is minus, so again it will be, and this diffusion current will be also in this direction, okay. Similarly if movement of electron is here, the diffusion current will be in this direction, okay. So now I can write that my total diffusion current, expression for total diffusion current, that will be jp plus jn. So jp will be
q dp upon dx, okay, and this will be q dn upon dx, okay. So if I want total current due to holes, if I want total current due to holes, that will be J hole drift, okay, J hole drift plus J hole diffusion. So you know what is drift current and diffusion current. So diffusion current will be Q P mu P electric field, okay, plus diffusion is minus Q dp upon dx, okay. Similarly, if I want total current, okay, for electrons, negative particles, that will be drift current due to electron drift plus drift current due to holes, okay, and diffusion current due to holes, diffusion. This will be equal to n q mu n electric field plus q dn upon dn by dx, okay. So these things we required when we understand the current flow in the PN junction, okay. So now just solve one problem. सर आपने dn by dx के लिए भी नेगेटिव साइन पुट किया था ना? किसमें? सर dn by dx के लिए भी एक नेगेटिव साइन पुट किया था, राइट? हाँ तो सर यहाँ पे आपने पॉजिटिव कर दिया उसको? वहां पे चार्ज नेगेटिव है ना? अच्छा, ओके, फ्लक्स चार्ज नेगेटिव है ना? तो ये बात ध्यान रखने के लिए, होल्स के लिए नेगेटिव आएगा, ये इलेक्ट्रॉन के लिए पॉजिटिव आएगा, ओके, ये चीज ध्यान रखने की यहाँ पर, ठीक है. नाउ दिस डिफ्यूजन कोएफिशिएंट, ओके, एंड योर मोबिलिटी, that both are dependent on temperatures, both are statistical parameters. So the relation between, this is called Einstein relation, okay. So dp upon mu p is equal to kT by q, and kT by q is called your Vt, thermal voltage, or voltage equivalent to temperature, or volt equivalent to temperature, volt equivalent to temperature, okay. For example, you know, if kT is 300 or room temperature is 300, so we know Vt is equal to how much? 0.026 electron volt, okay. So we can also write Vt equal to T upon 11,600, okay. So if you put T is equal to 300, you should get this value, EV. So temperature equivalent to voltage, okay. So this is similarly I can write dn upon mu n, that also kT by q, okay. So these two relations, okay, between diffusion coefficient and mobility, they are both dependent in crystal, okay, both are temperature dependent. So their relation is given by, it's called Einstein's relation. सर दिस 11,600 ये 300 केल्विन के लिए आपने लिखा है? नहीं, अगर ये भी फॉर्मूला है इसका, अगर यहाँ पे अगर केल्विन में ये, तो ये अगर आप इसको करोगे ना तो सेम चीज आएगा. इसको सॉल्व करके देख लो. ये 1 k by q है, k, हाँ, k by q, k is 1.38 into 10 to the power minus 23, okay, joule per Kelvin, okay, and your q is 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb, okay. इसको सॉल्व करने से ये आता है, चेक करके लिख लो, यहाँ पे 300 रख के देख लो, ये आ रहा है क्या आंसर. So if I take T is equal to 300, 11,600, हाँ सर आ रहा है सर, आ रहा है ना, 3/20. So this formula is correct, okay. So just quickly do one problem, simple problem है based on diffusion. Okay, हाँ. Yeah, your voice is broken. What do you say?
वो थोड़ा वॉइस ब्रेक होकर आ रहा है, जस्ट वेट 1 मिनट, आई थिंक देयर इज इंटरनेट इशू। हाँ हाँ, अब बोलो, कैन यू रिपीट द क्वेश्चन? Sir, electron. स्टिल Sir, am I audible? Still your voice is not audible to me. Sir, Okay, okay, we'll wait for 2 minutes, we'll solve the problems and then you can. So they are given a silicon sample, okay, at T is equal to 300 Kelvin, okay, and this says assume the electron concentration varies linearly from n is equal to 10 power 12 centimeter cube to 10 raised to power, okay, 16 centimeter cube, okay, over the distance from x is equal to 0 to x is equal to 3 micrometer, okay, and they are given dn value as 35 centimeter square upon second. So they are asking what is your diffusion current due to electron, okay, निकालो कितना आएगा diffusion current due to electron? What is the formula for diffusion current for electron? Q dn. सर ड्रिफ्ट निकालना है या डिफ्यूजन निकालना है सर? dn upon dx. निकालो कितना आएगा? कितना आ रहा आंसर? Okay, I'm writing the answer, you can check, okay. So Jane is coming as 187 ampere per centimeter square. ये आ रहा है क्या सबका? यस सर, यही आ रहा है. Okay, so today we have finished our fundamental of semiconductors, okay, and tomorrow onwards we'll start our p-n junction, okay, or once we go through the p-n junction, then we can start our circuits of diode, we can start solving the problems of diode, okay. So I'm ending the class here, okay. कोई डाउट हो तो पूछो. एक बच्चा डाउट पूछ रहा था, क्या पूछ रहा था वो? Sir, am I audible? हाँ, अब आ रही है थोड़ी आवाज. हाँ सर, हाँ आ रही है, बोलो. हाँ सर, मैं बोल रहा हूँ कि सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन एंड होल रिकम्बाइन कैसे करते हैं? मतलब इलेक्ट्रॉन तो क्या कंडक्शन बैंड पर है एंड होल तो वैलेंस बैंड पर है, वो रिकम्बाइन कैसे? रिकम्बाइन का मतलब क्या है? अभी जैसे बॉन्ड ब्रेक होके जाता है, जैसे एनर्जी सप्लाई कर रहे हो तो बॉन्ड ब्रेक होकर ऊपर गया, वापस आकर वो उसी बॉन्ड में उसी बॉन्ड को रिपेयर करते हैं तो रिकम्बाइन हो गया. Sir, after applying the voltage in a semiconductor, the electron are going to the positive side, hole are moving to the जब आप continuously negative terminal. When you are supplying continuous energy, then your particles are moving, okay. That recombination you are asking temperature, semiconductor में पढ़ा हुआ है, that is on equilibrium, not non equilibrium, okay. जब सिस्टम का सप्लाई एनर्जी कर रहे हो तो ऊपर जाएगा वापस आएगा, रिकॉम्बिनेशन जनरेशन होता रहेगा. That is when you applying continuous thing, then that is a non equilibrium statics, okay. वो अलग चीज है. वो मूव जो फोर्स आया किसी को कंटिन्यूसली मूव कर रहे हो, दैट इज डिफरेंट थिंग. और जैसे आप मूव करोगे वापस वो रुक जाएगा, then again it come down.
सो वो मूवमेंट जब बात कर रहे हैं जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगा हुआ उसके ऊपर, ओके। एंड देन आल्सो देयर इज ऑलवेज प्रोबेबिलिटी इज देयर, ओके। इलेक्ट्रॉन जा रहा है, मूव कर रहा है, फिर नीचे आ रहा है, but that we cannot that is non equilibrium, okay, that is not equilibrium states, okay. Okay. Thank you, sir. Thank you.